हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑलिवन। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं रोजाना आप लोग के लिए इस तरह के अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सोलो में पबजी में कैसे जीत सकते हो रैंगल में। आपको सोलो में कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको वैसे खेलते जाना, आप चिकन डिनर हमेशा जीतोगे सोलो में। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे सेफ जगह ये है दोस्त, और अच्छा सप्लाई भी मिल जाता है। मिलिट्री बेस में सब कोई उतरेगा, मैक्सिमम लोग, और जॉर्ज पोल में। जितना जल्दी आप उतरेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा कलेक्ट करने का। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा मुझे लगता है तब, लेकिन उससे पहले भी उतरूँगा, वहाँ भी अच्छा सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, प्लेन को उतरने से पहले हम लोग उतर गए। हम लोग के पास टाइम बहुत है। यहाँ से सप्लाई ले लिया, अब चलिए ऊपर चल के ले लेते हैं जहाँ पे मैंने बोला था। काफ़ी दूर दिया है सेफ जोन, हमारे पास 4 मिनट है। तो छोड़िए, अब वहाँ जाने का टाइम नहीं है। इधर से कुछ सामने से लेके निकल चलते हैं यहाँ से। सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को लास्ट का 10 जब अलाइव रहेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं शुरू से दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, अब अगला वीडियो आपको जो अलाइव 10 रहेगा वहाँ से दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, 18 लोग अलाइव है और मेरा लूट आप लोग को हम अभी शो करते हैं कि मैंने कितना अच्छा लूट किया है। तो ये आप लोग को दिख रहा है, 3 मेडिकेट, 6 फर्स्ट एड किट। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, M24 मिल गया। सेम गन रखिए, उसका गोली ज़्यादा रखिए, और 8x और 4x भी मिल ही गया हमको। वही हम अब पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ से सबको एम करके मारेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं बिकॉज अभी और लंबा नहीं तो चल जाएगा, ठीक ना। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आगे क्या होता है।
लास्ट टाइम में फ्रेंड्स ड्रॉप लेने कभी मत जाइएगा। कोई नहीं फ्रेंड, बैड लक। लेकिन ऐसे आप खेलते तो लास्ट टाइम तक आप जीत जाते हैं। ओपोनेंट शायद बहुत ज़्यादा अच्छा खेल है, लेकिन क्या मालूम कैसे मार लिया। छोड़ो, कोई नहीं। ऐसे खेलेगा आप लोग हमेशा जीतिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।